Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educators. Hope you all are fine and well by the grace of Allah Almighty. Welcome to computer class. This is the final term lesson number 4. So the topic is Introduction to Email. So before starting our lesson, the material required are lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, computer textbook. Dear students, lesson number 4 is about unit number 10, Introduction to Email. So the contents of the lesson are: what is an email, advantages and disadvantages of an email address, opening an email account. So dear students, by the end of this lesson, you will be able to learn what is an email क्या है, advantages and disadvantages, what is an email address. All of you open page number 88. We are going to read about unit number 10, Introduction to Email. So a few years ago, people communicated by writing messages on paper. These letters were delivered over long distances using trucks, ships and airplanes. So dear students, आज से कुछ साल पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? With the help of papers, which we call letters, जिन्हें हम लेटर बोलते थे. So ये letters distances पे पहुंचाए जाते थे with the help of trucks, ships and airplanes. Sometimes it is used to wait long time for letters to arrive. बाज़ ये पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा देर लगा देते थे. So people call them snail mails. ऐसे मेल्स जो कि हैंड रिटन होते हैं, पेपर्स पे होते हैं, लोग इन्हें क्या बोलते हैं? स्नेल मेल्स बोलते हैं. Nowadays, more effective way of communication called electronic mails is in use. आजकल जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव वे यूज किया जाता है. So this is called electronic mail. Electronic mail or email is method of sending or receiving messages using a computer that has internet connection. So dear students, email क्या है? Electronic mail है. E means electronic, mail means mail. Electronic mail is method of sending or receiving messages. ये ऐसा मेथड है जिसमें आप मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं और इजीली रिसीव भी कर सकते हैं. बट द फैक्ट इज दैट कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ईमेल इज फास्ट, यूजुअली टेकिंग ओनली अ फ्यू सेकंड्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. इट इज नॉट यूजफुल व्हेन यू नीड टू सेंड अ मैसेजेस टू एनी पीपल. ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप इसे किसी भी जगह पर सेंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू सेकंड्स. तो फ्यू सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में आपका मेल जो है वो नेक्स्ट पर्सन को जल्द से जल्द फास्ट वे में मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. So if you open the page number 89, we are going to read about advantages of an email. First advantage is cheap. Once you are online, there is no further expense you need to send your emails. So dear students, cheap means सस्ता. ईमेल क्या है? सस्ता है. इसके लिए फर्दर एक्सपेंस आपको पे नहीं करने पड़ते. नथिंग इज चार्ज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इवन थो द मैसेज इज सेंड अक्रॉस द वर्ल्ड. आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ता. इवन आप अपना मैसेज सेंड और रिसीव करना चाहते हैं फुल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में. सेकेंड इज इजी टू स्टोर. इट इज टू मच इजी टू स्टोर. सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड अटैचमेंट्स कैन बी स्टोर्ड सेफली, लॉजिकली एंड रिलायबली. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सेंड और रिसीव मैसेजेस को स्टोर करना बहुत ज़्यादा इजी है. थर्ड वन इज इजी टू यूज. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज सिंपल. इसमें बहुत सिंपल है मैसेजेस को सेंड करना और रिसीव करना. सेम इज एन एप्लीकेशन फॉर द होस्ट. अदर ईमेल फंक्शंस, डाटा स्टोरेज एंड कॉन्टैक्ट कैन बी एक्सेस्ड इजीली एंड क्विकली. इसे यूज करना बहुत ज़्यादा ईजी है और इससे हम कॉन्टैक्ट बहुत ईजीली और क्विकली कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज फास्ट. Email is by far the fastest mean of written communication. A message can reach any part of the world in a fraction of a second. So dear students, इतना ज़्यादा फास्ट है कि इवन आप इंग्लैंड में सिटिंग हैं और आप पाकिस्तान के पर्सन को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इजीली ये आपको मैसेज जो है वो फास्ट वे में सेंड कर सकता है. नेक्स्ट इज ग्लोबल. वेब बेस्ड ईमेल मीन्स यू कैन एक्सेस योर मैसेज एनीवेयर व्हेन यू आर ऑनलाइन. ग्लोबल मतलब ये है कि आप अपना मैसेज हर जगह पर हासिल कर सकते हैं इवन आप ऑनलाइन हो. अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप किसी भी स्पेस पर बैठे हुए अपना मैसेज गेट कर सकते हैं. लास्ट वन इज कंटेंट. द ईमेल मैसेज में कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लाइंस और 1000 लाइंस. मैसेज इज नॉट चार्ज बाय वेट एज इन पोस्टल सर्विसेज. डियर स्टूडेंट्स, फ्यू इयर्स अगो जब पोस्टमैन सर्विसेज को पोस्ट करते थे
तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते थे, वेट के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ते थे। बट ईमेल इज नॉट कंसिस्ट ऑन द दिस वेट। जितना मर्जी वेट हो इस मैसेज का, आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ता, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इजीली आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, चाहे ये फ्यू लाइंस का है या 1000 लाइंस का। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल। फर्स्ट वन इज इमोशनल रिस्पॉन्सेज। सम ईमेल मे अपसेट यू। बाज ईमेल आपको अपसेट कर सकती हैं, गुस्सा दिला सकती हैं, और काज एंगर एंड डिस्कम्फर्ट, और आपको गुस्से का और आपकी डिस्कम्फर्ट का बाइस बन सकते हैं। कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जो लोग आपको टीज करने के लिए करते हैं और अच्छे इमेजेस सेंड नहीं करते हैं और आपको बुरे बुरे इमेजेस सेंड करते हैं। सो दीज आर इमोशनल रिस्पॉन्सेज may cause upset you and anger you. Next is lack of personal touch. Email lack that personal touch that a handwritten cards or letter gives when it comes to relationship. So dear students, जो email है वो lack of personal touch है, इन्हें हम touch नहीं कर सकते। Like that handwritten card, handwritten card को हम touch कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारे hand में पकड़ाते हैं handwritten card, तो हम इन्हें touch कर सकते हैं, बट email को हम touch नहीं कर सकते और ये feelingless होता है। जैसे आप किसी का कार्ड आता है तो आप उसको टच कर सकती हैं, उसकी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं, बट ईमेल इज लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें आप फीलिंग्स नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द सॉफ्टवेयर मैसेजेस लाइक दैट। नेक्स्ट इज वायरस। अ वायरस कैन सीरियसली अफेक्ट योर कंप्यूटर। इफ यू वांट्स टू यूज एन ईमेल यू नीड टू नो हाउ टू डील विद द वायरसेस। डियर स्टूडेंट्स, वायरस सीरियसली आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकती हैं जब आप ईमेल यूज करते होते हैं। तो जब भी आप ईमेल यूज करें यू नीड टू डील दिस वायरसेस। आपको इन वायरसेस के साथ डील करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर्स में एंटीवायरस जरूर करवाएं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाते रहा करें ताकि आपके कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्ट ना करें। So now we are going to read page number 89, email address. What is an email address? To send or receive emails, you need to have an address called the email address. आपको ईमेल सेंड रिसीव करने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं। एन ईमेल एड्रेस फंक्शंस लाइक द पोस्टल एड्रेस। इट डिनोट्स द लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर अ मैसेजेस हैज बीन सेंट। सो ये वो लोकेशन बताता है जहाँ पे इंटरनेट की वो लोकेशन बताता है जहाँ पे आप मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं। एन ईमेल एड्रेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द यूजर नेम, the second is @ sign. As you can see that first is what? Username, and the second is @sign, and our third one is domain. Domain is called mail server. तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा मेल सर्वर यूज करना है। लाइक आपने www.hotmail.com यूज करना है, www.gmail.com यूज करना चाहते हैं, या फिर www.gmail.com यूज करना चाहते हैं। टुगेदर एन ईमेल एड्रेस शुड रीड एज लाइक दैट यूजर नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अली हमारा क्या है, यूजर नेम है। अली इज व्हाट? यूजर नेम। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट? @sign। @sign हमारे पास क्या है? सिंबल है। और याहू हमारे पास क्या है जी? मेल सर्वर। सो दीज 3 पार्ट्स आर इंक्लूडेड टू मेक अ ईमेल एड्रेस। यू मे चूज एनी नेम फॉर द यूजर नेम। आप यूजर नेम के तौर पे कोई भी नेम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे यूजर नेम के तौर पर यूज कर सकते हैं। However, you must remember it always. नेम वो यूज करें जो आपको हमेशा याद रहता है। The symbol @ separates the user name and the name of mail server. आप देख सकते हैं कि अली और याहू के दरमियान कौन डिफरेंशिएट क्रिएट करे? @sign. Domain is the name. Domain is what? Is the name of mail server. आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या है? हमारा मेल सर्वर नेम है। Like that Yahoo. We have used the Yahoo. For example, yahoo.com is domain name. याहू की जगह अगर आप जीमेल यूज करना चाहें तो जीमेल इज ऑल्सो डोमेन नेम एंड हॉटमेल इज ऑल्सो डोमेन नेम। आर टाइपिकली ईमेल एड्रेस लुक लाइक दिस: sunrisepub@hotmail.com. Many people can share the same domain name like kavi@yahoo.com. नेक्स्ट आप देखिए हमने एक ईमेल एड्रेस एक और बनाया है, ali@yahoo.com. तो अली कौन है? यूजर नेम है, @ कौन है? सिंबल, और याहू कौन है? मेल सर्वर। लाइक दैट वन मोर, रजी इज व्हाट? यूजर नेम, @ सिंबल, एंड याहू इज व्हाट? मेल सर्वर, डोमेन नेम। So email address is consist on 3 parts: username, symbol, and mail server. So dear students, now we are going to read about opening an email account.
An email address can be created easily through an email client website. The mail servers in such websites assign every user with a unique email address. So हर ईमेल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ईमेल सर्विसेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल सर्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईमेल सर्वर्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको यूनिक ईमेल एड्रेस असाइन करती हैं। सो सबसे पहले आपको मेल सर्वर्स को डिसाइड करना ज़रूरी होता है। सो फ्यू वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड फ्री ईमेल, कुछ वेबसाइट्स है जो आपको फ्री ईमेल प्रोवाइड करती हैं एज लाइक दैट मेल सर्वर। सो फर्स्ट वन इज www.gmail.com, second is www.yahoomail.com and the third one is www.hotmail.com। सो ये 3 वेबसाइट्स हैं जो आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करती हैं, इनके अलावा आपको और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। व्हेन यू ओपन दीज वेबसाइट्स यू कैन सी साइन अप ऑप्शन। जो आप इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है साइन इन का। क्या आप अपने ईमेल में क्या साइन इन करना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं। ऑन क्लिकिंग दिस ऑप्शन, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं क्वेश्चंस अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो क्वेश्चंस स्क्रीन पर क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। द क्वेश्चंस इंक्लूड योर नेम, क्वेश्चन किस चीज से मुतालिक होते हैं, आपके नाम से मुतालिक होते हैं। ईमेल एड्रेस, you prefer password, date of birth, etc. On answering all these questions, you receive a new mail address and password. So आप इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि आपका नेम क्या है, आपकी बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। इन क्वेश्चंस का जब आप आंसर कर देते हैं तो ईमेल न्यू अकाउंट जो है वो आपके पास ओपन हो गया देता है। सो लाइक दैट, follow this method, you can open the email account. Now all of you look at the exercise from page number 94, fill in the blanks. We are going to solve fill in the blanks. Dash and Dash offer free email services, who is hotmail.com and gmail.com. Dash is an electronic messages sent from one computer to another. Which one? Email. Dash is faster than ordinary mail. Email. Dash stands for blind carbon copy. BCC. Now it's time for task to do. Learn highlighted points from page number 88 to 91. Do exercise from page number 94. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you to have understand each and every point. So I will see you in my next lesson. Till that, stay home, stay safe. Allah Hafiz.